अगर आप बैंक पेंशनर हैं और एआईबी पार्क द्वारा शुरू की गई मेमोरेंडम सबमिट करने की मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो में एआईबी पार्क द्वारा लेटर अपने मेंबर्स को जारी किया था, जिसमें कि ये कहा था कि हम एक मास मेमोरेंडम कैंपेन शुरू करेंगे और उस कैंपेन के द्वारा मेमोरेंडम सबमिट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को और कॉपी डीएफएस को भेजेंगे और आईबीए को भेजेंगे। दोस्तों, इस मुहिम में शामिल होने के लिए आप भी अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा। वो भी मैं एक वीडियो जारी करूंगा। एक लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। यदि आपके पास कहीं से भी आपके दोस्तों के द्वारा व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा लिंक भेजा गया है, जिसको कि एआईबी पार्क द्वारा अपने मेंबर्स को या पेंशनर्स को सबमिट करने के लिए भेजा गया है लिंक, उस लिंक को कैसे आप सबमिट करेंगे, यही जानने के लिए मैं इस वीडियो में स्टेप्स बताना चाहूँगा, जो कि आप अपने मोबाइल से ही सबमिट कर सकते हैं। तो मोबाइल से कैसे सबमिट करेंगे, ये जानने के लिए आइए हम मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने दिखाएंगे। ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है। इसमें आप अपने जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे आपको लिंक किसी भी ग्रुप द्वारा भेजा गया है, जैसे कि मुझे नोएडा के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप है, उन्होंने भेजा है। ये लिंक का ये मैसेज है। आई रिक्वेस्ट all pensioners in this group to press link, type your name, mobile number, email ID and submit demanding pension updation. Please don't ignore. Link for submission of memorandum https://memorandum.aibprc.co.in C13 index dot php users registration save data. इस को आप just click on the blue link on conversion over. It is an online representation to IBA Govt DFS for updation of pension on RBI line. Don't miss. ये जो ब्लू लिंक है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये आपके सामने मेमोरेंडम को खोल देगा। इसको मैं पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। ये मेमोरेंडम 1/12/2023 की डेट में है। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। रिस्पेक्टेड मैडम, subject updation of pension and other issues of retirees. I profusely thank you for sympathetically considering improvement in family pension, 100% DA utilization to pre-November 2002 retirees, and granting pension option to resignees who had put in eligible pensionable service. The beneficiaries will cherish these with a sense of gratitude. At the same time, I am compelled to encroach upon your valuable time by humbly submitting a few words on aforesaid subject, with the high hope that you would kindly appreciate the deep agony of the senior and super senior citizen of the industry and take effective steps to resolve the issue immediately, as the pensioners have been waiting for more than 3 decades and several thousands have already left this world anxiously waiting for getting their legitimate updation of pension. तो पहला इशू उन्होंने पेंशन अपडेशन कर लिया है, जो कि डिटेल में फर्स्ट पैरा में मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ. दिस इज
well within your knowledge that the modality of allowing pension updation had been clearly spelled out in Bank Employees Pension Regulation number 35(1), Appendix 1, and it has been made universally applicable to all eligible retirees by an amendment passed in the year 2003 when Sri Atal Bihari Vajpayee ji was the illustrious Prime Minister of the country. This said amendment has also duly notified in the Gazette by the Government of India since the pension scheme is in the banks are model on central government and RBI employees pension scheme. I request you to ensure that the updation is done exactly in the same way as done for RBI pensioners. Our pension scheme is a defined benefit scheme where updation is well defined in amended regulation 35. One, updation is our legal right arising out of subordinate legislations. There is no scope for further negotiation or interpretation by IBA as regulation is a statutory provision with force of law. The banks, IBA, government are now to arrive at periodical updation formula as done in case of RBI basic pension plus DA relief plus 10% thereof and notify updation as per the RBI formula as part of Appendix 1. तो इस ढंग से इन्होंने ये पूरा डिटेल दिया है और फिर वही 95 से जो स्टे है वो सब कुछ रिपीट किया। दूसरा ये पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस का लिया, हेल्थ इंश्योरेंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर द रिटायरीज ऑफ द बैंक। तो ये at the instance of Ministry of Finance, Government of India, the IBA evolved a health insurance scheme for the bank retirees in the year 2015. Although in the government guidelines there was no mention about the shouldering of a burden of premium by the retirees. Still, the senior citizens were subjected to bear the burden. In the initial year, it was a modest sum of rupees 7,500 only, which within a period of 7 years jumped more than 10 times of what it was. ये इस पॉइंट को हाईलाइट किया। फिर उसके बाद आज के जो प्रीमियम बताया गया है ये सब चीजें उन्होंने डिटेल में बताई हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया है non reckoning of special allowance to compute pension and gratuity after 1/11/2012। तो ये 10th बाइपर्टाइट और 11th बाइपर्टाइट में जो स्पेशल अलाउंस को सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए नहीं माना गया है उसका डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। इसी मेमोरेंडम का जो आईबीए और AIBPARC जो एग्रीमेंट है उसको इलीगल बताते हुए उन्होंने कहा कि बाइपर्टाइट अरेंजमेंट में पेंशनर्स के लिए कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल्ड लॉ के अंडर पेंशन की स्कीम है कि आईबीए और यूनियन के बीच में कोई एग्रीमेंट और सेटलमेंट। फर्दर उन्होंने इसमें several such attempts by the IBA and unions in their earlier settlement were challenged in the courts of law and held by no less than the highest court of the country, the Honorable Supreme Court, as wrong and legally not tenable। ये डिस्क्राइब किया है। फिर उन्होंने डिजाइनिस के इशूज के बारे में भी बताया। The above issue has been resolved by way of an MOU signed between IBA and UFU on 9th November 2023, but a few aberrations still remain which are of no less importance. I request you kindly see that said aberrations are removed and justice is rendered। ये उन्होंने उसको हाईलाइट किया।
पांचवा पॉइंट उन्होंने कंसल्टेटिव स्टेटस फॉर द रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि our organization AIBPARC clarified our standpoint on the issue before you and IBA time and again. AIBPARC and others apex level organization of retirees must have the right full opportunity being being heard. IBA in pursuance of government of India guidelines, subsequently being backed by decision of managing committee of IBA, advise all members of the bank to form grievance redressal mechanism at corporate level, but strangely enough, IBA is denying the consultative status at its own level. It has been told to us on the several occasions that the IBA had the authority from member banks to talk to serving organizations only on wage revision and not with the organization of retirees on the matters relating to the pension. Now, a pertinent questions comes where from the IBA got the mandate of talking to the serving organization on the pension updation without getting specific authority from the member banks or the actual beneficiaries. Till today, I demand that the issue of the pension updation must be discussed with the retirees and pensioners organization who know where the shoe pinches and not others are representing serving employees or officers. में prayer की गई है. I know that our Honorable Finance Minister, Union Finance Minister, has a soft and sympathetic concern for the bank and retirees. It is because of her compassionate intervention, the issue of improvement of the family pension, 100% DA neutralization to pre-November 2002 retirees, issue of resignees, the upward revision of financial ex gratia to 1st January 1986 retirees have seen the light of the successful result. It is my firm belief and conviction that true to the assertion of Honorable Union Finance Minister in the 73rd AGM of IBA to treat the retirees of the bank as a member of the same family. The aforesaid issue which caused long time deprivation of bank pensioners and retirees would also be honorably resolved with your kind intervention and initiative. With the kind regards, copy to Secretary DFS, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, for kind information. दूसरी copy the Chairman IBA Mumbai for kind information. ये तीन डिटेल्स हैं जिनको कि भरना होगा. मैं भर के आपको दिखाता हूँ. इसके स्क्रीन में भरने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो इसलिए मैं अब आपको छोटे स्क्रीन में दिखाना चाह रहा हूँ. ये मेरा फ़ोन नंबर है दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में ये मेरा ईमेल आईडी है. ये तीनों कॉलम भरने हैं आपने और इसके बाद ये कंफर्म कर देना है. अब मैं क्योंकि पहले ही भर चुका हूँ तो इसमें ये मैसेज आ रहा है, you have already submitted earlier, you can सबमिट ओनली वंस. एक ही बारी सबमिट कर सकते हैं इसलिए ये एक ही बारी में ये मैसेज आएगा. तो दोस्तों इस तरह मैंने मोबाइल स्क्रीन पे आपको ये दिखाया है कि कैसे इस मेमोरेंडम को सबमिट करना है. अगर आप एआईबी पार्क के साइट पे जाएंगे तो वहां पर भी ये डायरेक्ट आप इसको फिलअप कर सकते हैं डिटेल को और अपने मेमोरेंडम को सबमिट कर सकते हैं. आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें. इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो मेरा ये मानना है कि उतने ही ज़्यादा लोग अपने मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेमोरेंडम पहुंचेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सुनवाई जरूर होगी.
और यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।